बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The principle states that the larger interface is split into smaller one because the implementation classes usually or use only the method that are required. We should not force the client to use the method that they do not want to use. So the goal of the interface segregation principle is the same of the single responsibility principle. So what we have कि हमें क्या करना है कि हमें सब कुछ इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल को अगर फॉलो करना है. सो वी वांट टू मेक श्योर कि हम अपने सारे के सारे जो मेथड्स हैं वो एक बड़े इंटरफेस के अंदर. वी डोंट वांट टू मेक we should not make a giant or you can say massive interface जिसके अंदर हम सारी मेथड्स को घुसा दें और फिर उसको अलग अलग क्लासेस के अंदर इनहेरिट करें और बोलें कि भाई तो सम ऑफ द क्लासेस आर नॉट रिक्वायर्ड दैट मेथड जो कि हमने उस इंटरफेस के अंदर तमाम मेथड घुसा दी हूँ. सो दिस विल बी द वायलेशन ऑफ द इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल. तो इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं. लेट्स जस्ट से कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस इंटरफेस सेग्रीगेशन. क्लाइंट शुड नॉट बी फोर्स्ड टू इम्प्लीमेंट एनी मेथड दैट दे डोंट यूज. कि जो आपका क्लाइंट मीन्स कि वो क्लासेस जो उसको कंज्यूम कर रही हैं, यानी एक इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर मेथड की डेफिनेशन होगी बट हम उसको इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी क्लास में, आप कहते हैं इनहेरिट कर रहे हैं. सो इम्प्लीमेंट इज़ द राइट वर्ड. तो क्या होगा कि फिर वो जो है ना एक कंपाइल टाइम एरर ही आ जाएगा पहले ही कि आपको ये मेथड जो है लाजमी इन ओवरराइट करना है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन नहीं है. सो विल सी दैट. तो उससे क्या होगा कि क्लाइंट को फोर्स कर इन्फोर्समेंट होगी कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस मेथड. Okay, so we should avoid this. Let's flip to the Visual Studio for watching this practically. So this is my console application and I'll create a model, and in the model I'll have a separate folder of the interface. और इसके अंदर हम एक इंटरफेस ऐड कर लेते हैं, न्यू आइटम. दिस इज द इंटरफेस एंड लेट्स रीनेम इट एज आई एम्प्लॉय. ओके, अब लेट्स जस्ट अस्यूम कि मैं वायलेशन करता हूँ. ठीक है, किस सिनेरियो में इसकी वायलेशन हो सकती है. मेक इट एज लेट्स इट इज इंटरनल और रिमेन इट एज. सो आई एम adding void employee, what employees can do in the office. Employee can play. Okay. Void can have lunch. Void can have coffee. Okay, following are the methods that I have. Okay, let's remove this. Have lunch can. Okay, and let's add a model, add a new class. Let's make a model. So you are adding a full-time employee and what you do, I employee, you implement this using console application does. I added the reference. Now you can see it is throwing me an error of type this. So it says what कि आपने ये मेथड जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं किया ये तीनों. इसका मतलब क्या है कि वट एवर आई डिफाइन हेयर आई नीड टू इम्प्लीमेंट. जिस भी क्लास के अंदर मैं इसको क्या करूँगा, इनहेरिट करूँगा. तो ये फोर्स करेगा मुझे. अगर मैं इसको नहीं करूँगा किसी एक भी मेथड को
तो ये क्या करेगा, एरर देगा, ये कंपाइल ही नहीं होने देगा कोड को, ठीक है। दिस इज द इन्फोर्समेंट ऑफ टू इम्प्लीमेंट दिस मेथड दैट इज डिफाइंड इन इंटरफेस। तो लेट्स अज्यूम कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है, वी राइट सम काइंड ऑफ कोड ब्ला 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 दैट कैन द बिजनेस लॉजिक, let's assume I write the business logic here, okay, for this employee. He can have let's assume he can play when time is 6 p.m. okay. If date time, if system dot date time dot now dot to string, and this is the format, is equal to 6. let's assume that I am adding a business logic के जो एम्प्लॉय है वो 6 बजे के बाद या 6 बजे खेल सकता है या प्ले कर, कैन हैव कॉफी एट दिस टाइम, और is equal to this. So this is the time to run the machine, or you can, so I'm adding all the business logic. Let's suppose I write something here. So these are the facilities for the full-time employee. Now let's add another employee, another client, we can say. I'm adding it in a wrong place. Let's add in the model, add new class, और इसको हम कहेंगे फुल टाइम से पार्ट टाइम। सो आई एम फोर्सिंग दिस कि मैं यहाँ पे भी ये मेथड इम्प्लीमेंट करूँ अब ये सारे। नाउ लेट्स थिंक कि क्या पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को हम ये सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। लेट्स अज्यूम कि हम उसको प्ले कर, ही इज़ नॉट अलाउड टू प्ले, क्योंकि वो पार्ट टाइमर है, वो थोड़ी देर के लिए आएगा और फिर वो प्ले करे, सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। सो अब क्या, ही कैन हैव लंच, आई एम एडिंग अ बिजनेस लॉजिक फॉर द लंच, दैट ओके you may lunch, adding some business logic here. Let's suppose he can have coffee, adding some lines of code here, but he cannot play. So you can see this is the violation of what, your interface segregation principle, because I have added a method play in the interface which is not implemented by all the clients. It is implemented by the full time, but it is not implemented by, because there is no business logic for this method. So for making it run this code, I'll have to write throw new not implement exception. So ये क्या होगी, ये वायलेशन हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे हम, we need to divide this interface into the smaller one. So I'll have another interface I'll do copy and paste, and we'll remove this method from here and also from here. So I employ play service, I had another interface. Now when you see for the full-time employee, I want to have this, so I'll do what, I'll implement this one also. Now you can see there is no error. Now I'll have to remove this. तो अब मुझे वो प्ले वाला मेथड पार्ट टाइम के अंदर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द वे टू वर्क विद द इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। सो द कंक्लूजन इज़ कि आपको सब कुछ जो है ना एक ही इंटरफेस के अंदर नहीं घुसा देना है, अपने क्लाइंट को इन्फोर्स नहीं करना है कि वो सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करे विच इज़ नॉट बाय यूज बाय दैट क्लाइंट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो को समझ आई हो, पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।